Hello everyone, welcome to HW News. The second wave of the pandemic was devastating for the country. Caught off guard, people struggled to get basic medical facilities as the cases surged to almost 4 lakh a day during the peak. If you talk about the second wave of the pandemic in India today, nothing can describe what it was like better than the images of hundreds of people lining up outside oxygen plants searching for the life-saving gas. There were videos of people lying on the bed, hardly able to breathe, and there was hardly any oxygen. Many also died just because the oxygen supply got over at the hospital. On their parts, the hospitals were also struggling to provide the supply to the patient. We have seen videos of appeals made by hospital directors seeking more oxygen supply. Many lost their relatives, friends and families because they could not get oxygen on time. Delhi was one of the regions which faced the maximum issues regarding oxygen supply. The Kejriwal government then blamed the crisis on the centre, saying that the government is not providing them with enough required stock of liquid oxygen. However, after the High Court and the Supreme Court warning, the centre had to provide more oxygen to Delhi to fulfill the demand made by the state government. Now, an audit team appointed by the Supreme Court of India has reportedly found out that the Delhi government exaggerated the oxygen requirement in the national capital by more than 4 times during the April 25th, May 10th peak period of COVID-19 second wave. This also affected supply to many other states, said the interim report of Supreme Court audit team, which was submitted by the centre in the court. The report said the Delhi government's claim of 1,140 metric tons was 4 times the calculated consumption as per the formula based on bed capacity, which was just 289 metric tons only. The audit panel included AIIMS Director Randeep Guleria, Delhi Government Principal Home Secretary Bhupinder Bhalla, Max Healthcare Director Sandeep Buddhiraja, Union Jal Shakti Ministry Joint Secretary Subodh Yadav, and Sanjay Kumar Singh of the Petroleum and Oxygen Safety Organization, also known as PESO. A study was conducted under which the findings were reported. According to the study, the Delhi government's data said from April 29th to May 10th, the consumption of oxygen did not exceed 350 metric tons. However, it put out a demand of 700 metric tons. The average consumption of oxygen in Delhi was between 284 to 372 metric tons in this particular period. The study further added that the infrastructure was inadequate in the state for storing 700 metric tons that was demanded by the government. The report said Delhi had surplus oxygen, which also affected the supplies to other states, and it was a disaster in waiting if it continues like this. Furthermore, the document cites an instance where 4 Delhi hospitals claimed high consumption of oxygen, although they had fewer beds. Single Hospital, Aruna Asaf Ali Hospital, ESIC Model Hospital and Life Ray Hospital claimed extremely high oxygen consumption with very few beds, and the claims appear to be clearly erroneous. This led to extremely skewed information and significantly higher oxygen requirement for the entire state of Delhi, the document said. At the peak of the second wave, oxygen crisis had become a heated political debate, and the central government also faced a massive backlash, severe criticism over it. Responding to the latest revelation, now BJP leader Sambit Patra held a press conference and slammed the Delhi government. He said, many lost their family members in Jaipur Golden Hospital and in Patra Hospital. Now, this report has revealed that Arvind Kejriwal is responsible for these deaths. We are sure Kejriwal will be held accountable for criminal negligence in the deaths in the Supreme Court. Aam Aadmi Party's focus has been only on advertising and zero management. They have spent 1,000 crores on advertisement. However, they kept lying to the people. This is what Sambit Patra said. However, countering the allegations, Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia lashed out at the Bharatiya Janata Party. Sisodia claimed that the alleged report does not exist. He said, we spoke to members of the audit committee who say that they haven't signed any report or approved it. Where has this report come from? I ask BJP leaders to calm down and ask themselves, where is this report based on which they are levelling allegations? This is what Manish Sisodia said. He also asked, were those people begging and crying for oxygen on the streets lying to people?
where the hospitals making SOS calls were lying to people. Now, this is what Manish Sisodia has said. Let us see what both the leaders have said in their press conferences. As of now, the report has been submitted by the centre in the Supreme Court. What action does the top court takes? That remains to be seen. Do let us know what you think about this in the comment box below. For more news and updates, you can log on to www.hwnews.in. कि ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या? कोई जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? कोई इस प्रकार की छोटी राजनीति कर सकता है क्या? ऐसा कभी लगता नहीं था, मगर आज ये सब सत्य हुआ है। जब यह रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे उनको बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मगर वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी। और 12 राज्य जहां कोविड के बहुत केसेस थे उनको सफर करना पड़ा, उत्तर प्रदेश को सफर करना पड़ा, हरियाणा को सफर करना पड़ा, बाकी राज्यों को सफर करना पड़ा है। आप सोचिए जरा, ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। मैं कोई गाली गलौज की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं आक्षेप की राजनीति में भी विश्वास नहीं रखता हूं, मगर यह सवाल तो हम पूछेंगे ना कि 12 राज्यों के ऑक्सीजन को काट करके आपने यहां केवल अपनी राजनीति के लिए, क्योंकि आप नाकाम हो रहे थे, आप फेल हो रहे थे, आपको कहीं ना कहीं यह ब्लेम शिफ्ट करना था, आपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया कि देखो दिल्ली को किस प्रकार से सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ किया जा रहा है, दिल्ली के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और आपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को गाली दी कि हमारे ऑक्सीजन को रोक ले रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी रोज टीवी पे आकर गाली देते थे उस समय कि हमारे ऑक्सीजन को ये रोक रहे हैं, मगर आज मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने झूठ बोल के ऑक्सीजन लिया और 12 राज्य उससे प्रभावित हुए। जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी, ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं, और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन मामले की सुनवाई करते हुए एक ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है,
तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? ये कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट कहां से आई? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो सुबह से चैनल्स पे बैठ के चिल्ला रहे हैं, उनका गला थक गया होगा कि थोड़ा सा पानी पिएं आराम से और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें कि भाई ये रिपोर्ट कहां है जिसके बेस पे हम चिल्लाए जा रहे हैं सुबह से? रिपोर्ट कहां है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो? लाइए वो रिपोर्ट कहां है? Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news.